हेलो एवरीवन। साउंड्स ऑफ इंग्लिश की इस सीरीज़ में अब हम स्टार्ट कर रहे हैं टोन एंड इंटोनेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल, इंट्रोडक्शन। इन स्पोकन इंग्लिश आवर टोन एंड इंटोनेशन एक्सप्रेस इमोशंस एंड एटीट्यूड बियॉन्ड वर्ड्स। तो हमारी टोन और इंटोनेशन हमारे इमोशन और एटीट्यूड को एक्सप्रेस करती है, जो कई बार वर्ड्स भी एक्सप्रेस नहीं कर सकते। एक ही सेंटेंस अलग अलग तरीके से साउंड कर सकता है और वो डिपेंड करता है कि हम कैसी इंटोनेशन यूज़ करते हैं और क्या इमोशन एक्सप्रेस करना चाहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, यू फिनिश्ड। दिस इज़ अ सिंपल स्टेटमेंट। यू फिनिश्ड, दिस इज़ अ क्वेश्चन। यू फिनिश्ड, इट इज़ सरप्राइज और डिसबिलीफ। तो हमने इन 3 एग्जाम्पल्स में देखा कि सेंटेंस एक ही था, पर हमारी टोन, मीनिंग, इमोशन और इंटेंशन को चेंज कर देती है। सो वी कैन से इंटोनेशन एड्स म्यूजिक एंड फीलिंग टू इंग्लिश, मेकिंग इट साउंड नेचुरल एंड एक्सप्रेसिव। नाउ डेफिनेशन ऑफ इंटोनेशन. Intonation means the rise and fall of pitch while speaking. It helps express emotion, politeness, interest, or doubt. Tone is a part of intonation that shows speaker's attitude or mood. So, in simple terms, intonation is how our voice goes up or down, and tone, the emotion carried by that rise or fall. और अब देखते हैं फंक्शंस ऑफ इंटोनेशन। फर्स्ट, सेंटेंस टाइप दिखाना, जैसे कि सेंटेंस क्वेश्चन है, स्टेटमेंट है, रिक्वेस्ट है या कमांड है। सेकंड, इमोशन शो करना, जैसे कि हैप्पीनेस, एंगर, सरप्राइज और डाउट। थर्ड, पोलाइटनेस या एटीट्यूड दिखाना, फ्रेंडली, फॉर्मल, एंग्री और कैजुअल। और फोर्थ है स्पीच में नेचुरल रिदम बनाना। और फिफ्थ, इम्पॉर्टेंट शब्दों को हाईलाइट करना। और आइए अब देखते हैं टाइप्स ऑफ साउंड। फर्स्ट इज राइजिंग टोन, एंड दिस इज यूज्ड इन येस और नो क्वेश्चंस, uncertainty or interest. Are you okay? Next is falling tone, used in statements, commands or certainty. I'm fine. Third is rising falling tone. This shows strong emotion, excitement or contrast. That's incredible. And last is falling rising tone. This is used for politeness, hesitation or doubt. Maybe later. And now let us study examples of intonation in sentences. Sentence: will you join us for lunch? It has rising tone, which suggests question and invitation. Second, I can't believe you did that. This shows surprise or disbelief. Third, she speaks fluent French. This is a statement or a fact. Fourth, you will enjoy this trip. It has rising tone and shows excitement and anticipation. Fifth is, could you open the window please? It has falling tone, which shows polite request. Sixth, why didn't you call me? It has rising tone, which shows question or disbelief. Seventh, I think it might rain today. It has falling tone, which shows statement or possibility. Eighth, the performance was amazing. It has rising and falling tone. It shows excitement or joy.
Ninth, are we going to the right way? This sentence has a rising tone which shows uncertainty or checking. And last sentence, let's meet after class. It has falling tone which shows suggestion or plan. Now let's have detailed explanation of key patterns. First, rising tone. इसमें voice pitch goes up at the end of the sentence. ये यूज़ होता है yes or no questions में, incomplete thoughts में या uncertainty में. Examples: Do you like music? Is it ready? Next is falling tone. इस कैटेगरी में वॉइस पिच गोज डाउन एट द एंड एंड ये यूज़ होती है स्टेटमेंट्स में, कमांड्स में और सर्टेनिटी में. एग्जाम्पल्स: ही फिनिश्ड द वर्क. सेकंड, क्लोज द डोर. नेक्स्ट है राइजिंग फॉलिंग टोन. इन दीज सेंटेंसेस वॉइस rises first, then drops sharply. And these sentences are used to express enthusiasm, emotion, or surprise. Examples: That's wonderful. Amazing. And last category, falling rising tone. Voice drops and then rises again slightly. These sentences are used to show doubt, hesitation, or gentle politeness. For example, well, maybe, I suppose so. और अब प्रैक्टिस एक्टिविटी. यू आर रेडी एक सेंटेंस है. इसको आपने राइजिंग, फॉलिंग, राइजिंग फॉलिंग और फॉलिंग राइजिंग टोन के साथ बोलने की प्रैक्टिस करनी है. आप अपनी आवाज़ को रिकॉर्ड करके भी देख सकते हैं कि आपकी इंटोनेशन इमोशन या एटीट्यूड के हिसाब से ठीक तरीके से चेंज हो रही है या नहीं. नाउ लेट अस टेक एन एग्जाम्पल फ्रॉम लिटरेचर. A famous quotation from William Shakespeare's play Hamlet, and its intonation pattern is to be or not to be. That's the question. इस सेंटेंस में जब पिच शिफ्ट होती है तो वो हैमलेट के इनर कॉन्फ्लिक्ट और फिलोसॉफिकल डाउट को रिप्रेजेंट करती है. ये सिर्फ क्वेश्चन नहीं है, उसके मन में एक सेल्फ कॉन्टेम्पलेशन चल रही है किसी डाउट के बारे में. एंड नाउ प्रैक्टिस एक्सरसाइज. रीड अलाउड एंड मार्क द टोन. Did you see that? It's beautiful. I'm not sure. Turn off the light. मैंने इन सेंटेंसेस को न्यूट्रल टोन में पढ़ा है और आपने इनको सही इंटोनेशन के साथ पढ़ना है. सेकंड एक्सरसाइज इज लिसन टू इंग्लिश स्पीकर्स, मूवीज और न्यूज़ पॉडकास्ट. Where does their voice rise or fall? How does it change the meaning or emotion? ये आपके लिए एक प्रैक्टिस एक्सरसाइज है और ये लॉन्ग टर्म के लिए एक्सरसाइज है. जब भी आप कोई मूवी देखते हैं, न्यूज़ सुनते हैं या किसी पॉडकास्ट को सुनते हैं, और ख़ासकर उस समय जब आप किसी इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री के लोगों को सुन रहे हैं, तब आप उनकी वॉइस के राइज और फॉल को नोटिस कर सकते हैं. इससे आपको पता चलेगा कि कैसे टोन से किसी शब्द का मीनिंग और इमोशन कन्वे होता है.